talking about the angular degree of freedom, then what we have seen that how my theta and phi is going to change and how this quantization will come into picture. So now we will just try to solve the complete picture of quantum mechanics in a spherical polar coordinate system. So now the rest part is radial part. Right now, we are just trying to concentrate ourselves when my potential is only and only function of R. In general, we are talking about the central force. So we will just try to see how things are uh, analyzing in case of central force, where our potential V is nothing but only function of R. So I can I can write my Hamiltonian, and this is time independent Hamiltonian. Psi r theta phi is equal to E psi r theta phi. So this is my Hamiltonian, and this is energy eigenvalue, and r is the basically distance from origin, and theta and phi is the polar angle as well as azimuthal angle. Now, so what is my h? My h is all about minus h cut square upon 2m. That is nothing but the, and del square, this is nothing but the kinetic energy. So psi r theta phi plus we have potential energy Vr psi r theta phi is equal to E psi r theta phi. Now, the whole agenda is that how we will solve this type of problem. And yes, we are considering only, we are just taking only that potential who is only function of R. So now what is your del square? So we have to write this Laplacian into a spherical polar coordinate system. So when we will write this Laplacian into a spherical polar coordinate system, then I hope everybody knows this particular expression. So I have to write the long equation. So I am using from this side. So this is minus h cut square upon 2m. And this Laplacian is 1 upon r square del upon del r square del psi upon del r. This is radial part, as well as we have 1 upon r square sine theta, and we have del upon del theta sine theta del psi upon del theta. And next is the azimuthal part. So this is 1 upon r square 1 by sine square theta del square psi upon del phi square. So this is my del square psi. So this is my complete del square psi. Plus we have potential energy that is only function of R, and that value is psi r theta phi. And that value must be equal to E psi r theta phi. Okay. So we have to solve this particular equation. And before going to solving this particular equation, let us discuss some physics behind that. So when we are just trying to solve that particular thing, so this is central force potential. That means angular momentum of a system, is conserved. Yes, if your force is central, then angular momentum is 100% conserved because external torque will be 0. You can calculate the force. That force is equal to minus del V upon del R in the r cap direction. So you can just use this thing. Fr is equal to minus del V upon del R in r cap direction. And your torque is equal to R cross F. And your R is also R
into r cap direction. So r cap cross r cap is equal to 0. So torque is 0. So angular momentum is conserved. So this is physics behind this central force problem. So if we are using this physics, how we can apply it into the quantum mechanical system? Then I can claim that my Hamiltonian is going to commute with L square. Can I claim it? Yes. We can easily claim it that L is the angular momentum which is conserved. That means that have to commute with the Hamiltonian, because L is not a explicit function of time, and we can just use this particular relationship. And beautiful thing is that if L square is going to commute with Hamiltonian, then I can claim then YLM theta phi is also eigenstate of H. So here we have this commutation, and this commutation give us freedom to write my wave function psi r theta phi as a radial part of wave function into a spherical harmonics. And we all know this particular, all nature of a spherical harmonics and all the property, all the physics behind this. So we can have this information already. So the next target is that we have to talk about only this particular radial wave function. So now, this is the one thing. And if you will remember, so I am just giving this explanation. So everyone is comfortable right now? Yes, sir. Yeah, the clear hai na? So what I can do, I can write my psi r theta phi is nothing but radial part and y lm theta phi. So we have this conclusion. Why? Because we have this expression. Now, let's do mathematics. So when we are going to doing this particular mathematics, then we can rewrite this equation, and this equation is something minus h cut square upon 2m 1 upon r square del upon del r square del psi upon del r minus, and I am taking this minus, and you are taking some plus, and I am writing is something like this. Plus I am using here minus h cut square upon 2m r square and this angular part. So this angular part is 1 upon sine theta del upon del theta sine theta del psi upon del theta plus 1 upon r square I am taking common, and this minus h cut square is also I am taking inside the bracket. So 1 upon 2m r square here, and this thing is nothing but 1 upon sine square theta del square del phi square psi plus Vr psi r theta phi is equal to E psi r theta phi. So now, if you will see this particular expression very carefully, what is this expression? ये क्या कह रहा है? This is well known to us. क्या कह रहा है ये? Sir, angular momentum L square. कौन सा ऑपरेटर है ये? This is L square operator. आपको याद होगा हम लोगों ने जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, then this is nothing but what? L square operator. So what you can do, you can write the whole thing something like this: minus h cut square upon 2m 1 upon r square del upon del r square del psi upon del r, plus I can write this whole thing as capital L square, which is angular momentum operator, by 2m r square psi r theta phi
plus VR psi r theta phi must be equal to E psi r theta phi. So this is our next equation we have to analyze. यहां तक क्लियर है? आज हम लोग जस्ट फॉर्मुलेशन की बात करेंगे एंड वी विल talk little bit about radial wave function and radial probability density. Everyone is comfortable? Yes, sir. पुनीत के अलावा, पुनीत तो बहुत बार कंफर्टेबल हो चुका है ना? Yes, sir. और बाकी लोग? सर एक मिनट, ये इक्वेशन लिख रही है सर, साइड पे वो जो थोड़ा साइड हट जाऊं? इसे तो खुद कर लोगे अगर समझ में आएगा तो, है ना? समझ में आ रहा है या नहीं? So I can remove this part also. I can remove this part also. है ना? So we have this equation. Clear है ये? चलो. So now what I can do, I can write my psi r theta phi as radial part rr and y lm theta phi. लिख सकते हैं because we have physics behind that. Angular momentum is conserved and this is eigenstate of angular momentum. So this is the Hamiltonian, the eigenstate of Hamiltonian, which can be written into this form. So now when we are going to apply this thing, then what we will get? We will get minus h cut square upon 2m, and this partial will convert it into the total. So this is 1 upon r square, d upon dr, r square, d radial part upon dr, ylm is just constant for it. For second part, L square will operate on ylm theta phi. So what you will get? L into L plus 1 h cut square upon 2m r square, and you have radial part rr and ylm theta phi. And this is only function of r, so there is not any problem. We can write VR radial part and ylm theta phi is equal to E radial part and ylm theta phi. Yes. What we will do, we will just compare the ylm on both sides. Please write it in a bracket. So we will compare the ylm into both sides. दोनों तरफ से हम ylm compare करेंगे. Then what we have a beautiful equation, and that will be minus h cut square upon 2m, 1 upon r square, d upon dr, r square, d radial part upon dr, plus L into L plus 1 h cut square upon 2m r square. Again, we have radial part only. And we have next one is basically VR radial part is equal to E radial wave function. And we can simplify this equation also. So this is two function. So we have minus h cut square upon 2m. This r square is cancelled out. So we have d square r upon dr square. Second time, we can just differentiate this r square. So 2r will be there, 1r will be cancelled. So this is 2 by r dr upon dr plus L into L plus 1 h cut square upon 2m r square, radial part rr plus vr radial plus rr is equal to E r. This is your radial part. So what we have to do, we have to solve this particular equation. And now, in this particular equation, the combined term is the total energy. This is nothing but the potential energy.
this is nothing but the rotational kinetic energy. And this term is very famously known as translational kinetic energy. So we are just talking about translational kinetic energy. Kinetic energy. So we have new operator. If you are working into the three-dimensional picture into a spherical polar coordinate, then translation kinetic energy is basically minus h cut square upon 2m d square upon dr square plus 2 upon r d upon dr. So this is my operator for the translational kinetic energy. And if we are adding these two things, then this is the kinetic energy and this is potential energy. And now this is identified as total energy of a system. यहाँ तक clear है, everyone? Yes, sir. Okay. So obviously we have to solve this equation actually. Whenever the problem will come, we have to solve this equation. So to solving this equation, what we can do, we can just parameterize all this thing with a new parameter or new variable. And let's use this new variable. And this is also, so this is required there. What we will do, we will assume my radial wave function is some function of r 2 by r. And when you will put it into this particular equation, what you will get? You will get minus h cut square 2m, and that is d square u dr square plus L into L plus 1. Sorry, this is your thing, and this 2mr square, this is plus here. Okay. Plus potential energy Vr, and you have Ur is equal to EUR. So this is a little bit simplistic form. So whenever in the examination, the problem will come to find the radial wave function, you have to start from here, this R, and then you can find the value of capital R. That is actually radial wave function. So first we have to solve for u, and this is your plus, okay? This is your plus. So you, and this particular term is very important term, which is known as V effective. Okay, so this is known as V effective, and now you can easily calculate the thing. यहाँ तक clear है ना, everyone? हम लोग just formulation की बात कर रहे हैं, problem हम लोग next class में करेंगे, but आज सारे concept देख लें. Yes? Yes, sir. Okay. So next part is that normalization of total wave function and radial wave function, and what is radial probability density, and how we will go for the expectation value of some physical quantity if you have operator. Okay, so what is your mother equation? Your mother equation is basically, आपको सारा एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में जब भी प्रॉब्लम आए, you will start from here. So minus h cut square upon 2m d square u dr square plus L into L plus 1 h cut square upon 2mr square plus Vr ur is equal to EUR, where radial wave function is nothing UR by R. Okay. Now let's try to go for normalization part. So यहाँ से हम, so everyone is comfortable now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. So if we have my wave function, and that wave function is psi r theta phi, this is my wave function, then the normalization constant is mod square, and we have to go for the triple integral, and we have to go for r square
sine theta dr d theta d phi, and this must be 1. R will go to 0 to infinity, theta will go to 0 to pi, and this will go to 0 to 2 pi. Okay. Now we have this information also that psi r theta phi must be equal to radial part of wave function into ylm theta phi. So what we can do, we can separate the radial part and we can separate the angular part. So when we are separating the radial and angular part, this whole thing can be written as radial wave function mod r square dr 0 to infinity, and we have ylm theta phi mod square sine theta d phi, and this will be 0 to pi, 0 to 2 pi, must be equal to 1. So if this is going to happen, then this whole term, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1. 1, because this is the normalization condition for spherical harmonics. So this term is 1. So from there, I can make a conclusion, and this conclusion is 0 to infinity mod r square dr must be equal to 1. So this is my normalization condition for radial wave function. And from here, the radial probability density rho r dr is, and this is nothing but the probability to find the particle between r to r plus dr. So this whole thing is probability to find particle between r to r plus dr is given by mod r square dr. So if we are going to compare these two things, then what we will get? We will get radial wave function rho r is equal to rr. Sorry, radial probability density is mod r square. So this is your radial probability density. So एग्जाम में लास्ट ईयर भी जस्ट के एग्जाम में एक प्रॉब्लम था इसके ऊपर, इससे पहले भी कई बार प्रॉब्लम आ चुका है. दे विल गिव यू जस्ट द टोटल वेव फंक्शन और रेडियल वेव फंक्शन, एंड यू हैव टू प्लॉट व्हाट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. सो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज नथिंग बट मॉड आर स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर. ये हमेशा आप दिमाग में रखोगे. ओनली मॉड आर स्क्वायर इज नॉट रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. Mod r square is your radial probability density. But this is very interesting. Okay. So this is known as radial probability density. This is known as radial probability density. Now, if you want to calculate the expectation value of, suppose right now, यहाँ तक clear है ना, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So, now we have two type of wave function. The first wave function is total wave function. And total wave function, if I am talking about r theta phi, where variable is r also, theta also, and phi also. And the radial wave function, and second is radial wave function. Which is only function of r. Okay. And this is also normalized. This is also normalized. Now,
if you want to calculate the expectation value of some function which is only function of r, then your radial wave function is useful or psi is useful or both are useful? both. Both are useful. So आप इसको कैसे लिखोगे? या तो आप लिखोगे, अगर आप रेडियल वेव फंक्शन यूज करते हो, देन यू हैव एफ आर मॉड आर होल स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर. दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ आर, and this can be also equal to the triple integral fr psi r theta phi mod square r square sin theta d theta, sorry, sin theta dr d theta d phi. ओके, सो अगर आप ये, अब आपको ध्यान देना होगा कि एग्जाम में क्या पूछा है, आपको इसके थ्रू अप्रोच करना है या इसके थ्रू अप्रोच करना है. तो अगर इसके थ्रू अप्रोच करोगे, देन ओनली यू हैव टू गो फॉर 0 to infinity. अगर इसके थ्रू अप्रोच करोगे, और दोनों से सेम ही आंसर आएगा, दैट विल गो फॉर 0 to infinity, 0 to pi and 0 to 2 pi. ओके, एंड यस, दिस इज ओनली फंक्शन ऑफ r. और सपोज अगर कोई हमारे पास ऐसा वेव फंक्शन है, suppose not wave function, suppose we have a some function, उसकी expectation value लेनी है, that is function of r theta phi, then which one you are going to use? Total, Both or first one or total second wave one? function. Total wave function का use करोगे, then you have to just go for f r theta phi, and that will be triple integral. This is mod psi square, and you have r square sin theta dr d theta d phi. And you will go for 0 to pi, 0 to 2, sorry, first 0 to infinity, 0 to pi, and 0 to 2 pi. Okay, so this is yours. यहाँ पर मैं r theta phi लिख दूं, just a minute. तो ये आप हमेशा दिमाग में रखना, अदरवाइज एग्जाम में गलत होंगे. इसमें इसके प्रॉब्लम बहुत आसान होते हैं, बट एग्जाम में चीजें गलत हो जाती है. दिस इज साई आर थीटा फाई मॉड स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई. ओके, so this is the thing you have to remember also, and you have to always careful about all this thing. Total wave function is normalized, radial wave function is normalized, angular part of wave function is also normalized. You have to see which part is useful for you, और किसके थ्रू आप शॉर्टकट में फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो. ठीक है, so this is all about the formulation of radial wave function. Tomorrow we will we will just discuss two main system. One system will be free particle confined in a spherical box or some spherical region, and then we will go for hydrogen atom. So tomorrow we will just start from the scratch, because अभी करेंगे तो वो हाफ हाफ में रह जाएगा, मजा नहीं आएगा. So tomorrow we will go for that system. ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. सर. हाँ बताओ. सर एक छोटा सा डाउट था, ये जो एफ आर का हम लोगों ने एवरेज वैल्यू ले रखा है, जस्ट इन केस ये कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, तो आई विल राइट इट लाइक आर कंजुगेट एफ आर एंड आर, राइट? समझा नहीं, क्या बोल रहे हो सर? अगर ये डी बाई डी आर होता एफ आर मेरा, और मैं इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने की कोशिश करता, देन आई विल राइट इट डी लाइक अपॉन डी आर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाह रहे हो? हाँ सर, हाँ, ऐसा कोई चलो ऑपरेटर हो ठीक है. जाता, फिर देन अगर मैं इसको लिखता तो मैं आर कंजुगेट एफ आर एंड आर हाँ, लिखता. बिल्कुल बिल्कुल. ओके ओके सर. बेसिकली ओके, सो तुमने थोड़ा, बिल्कुल भाई, बेसिक तो वही रहेगा एनीवे. सो बेसिकली यू हैव टू गो फॉर एफ आर स्टार सम एफ आर आर स्क्वायर डी आर. ओके, आर सर, आर कंजुगेट, sorry, that is radial part,
and you have to go for FR. This is conjugate and this will be radial part. Okay? Yes sir. है ना? Yes sir. Yes, Sir, you वो are absolutely correct. हाँ बताओ. कुछ नहीं सर, वही आर स्क्वायर की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था, इसलिए क्वेश्चन. FR इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, कुछ देगा, फिर आप आगे देख सकते हो. ठीक है? यस सर. ओके, गुड. वैसा कोई खास यहाँ पर जरूरत हो सकती है. मान लो सपोज काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू निकालना पड़े, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ही हमारा क्या है? दैट ऑपरेटर इज माइनस एच के टू स्क्वायर अप टू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर 2 अपॉन आर डी अपॉन डी आर. तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? ये आर के ऊपर ऑपरेट करेगा एंड देन इट विल गिव समथिंग एल्स, है ना? यस सर. ओके, सो ऑब्वियसली द फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑलवेज देयर. ठीक है? यस सर. है ना? फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑलवेज देयर. ऑब्वियसली यू हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो. ठीक है? बट इन जनरल मैं वैसा ले रहा हूं जैसे कि डिस्टेंस स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर एंड ओनली फंक्शन ऑफ आर, एफ आर को उस तरह से ले रहा है अभी. ठीक है? ओके, एनी डाउट? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो. और रिवीजन कर रहे हो या नहीं? अभी तो खैर फेस्टिव सीजन है, सो आई थिंक आफ्टर होली यू शुड गो फॉर जून एग्जाम के लिए 100% लग जाना, है ना? ठीक है? जी सर. रिजल्ट निकालना है भाई. और देखो सब कॉपी से आएगा. अब आपके ऊपर है कि आप 3 महीने में कर लो, 6 महीने में करो या ना करो. क्वेश्चन तो सारे कॉपी से आएगा. अब आपको एग्जाम में करना है, इसके लिए एक व्यवस्था करो. ठीक है? यस. सो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि एटलीस्ट 60% क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने चाहिए जो आपकी कॉपी में है, तो भी आपका काम चल जाएगा. ठीक है? सो प्लीज रिवीजन पर थोड़ा ध्यान दो, है ना? और अपनी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. एनीवे, हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं. सो आफ्टर होली वी विल हैव 1 काउंसलिंग सेशन जिसमें हम आपको पूरा प्लानिंग दे देंगे कि आगे क्या क्या करना है. ठीक है? सो वी आर जस्ट टेकिंग द फीडबैक. अगर आपका भी कोई फीडबैक है तो दे सकते हो. देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम. कोई फीडबैक है क्या जो आप इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हो? जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मुझे काफी अच्छा फीडबैक दिया है, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट फीडबैक. एक्चुअली दीपनविता ने काफी अच्छा फीडबैक दिया है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं एंड होप होली के बाद उसे इम्प्लीमेंट करें. आप में से भी कोई अगर फीडबैक देना चाहता है तो दे सकता है. ओके, कि ये इम्प्रूव करना है, ये इम्प्रूव करना है. कुछ भी नहीं? ऑल गुड? पुनीत चला यस गया. सर. सर वो कुछ फीडबैक दो सर से हम और इम्प्रूव कर सके. शेड्यूल को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते थे सर. लाइक शेड्यूल को कैसे इम्प्रूव करना? जैसे सर शेड्यूल हम लोग को डेली मिलता है सर, है ना? तो उससे क्या होता है कि आइडिया नहीं लग पाता कि नेक्स्ट क्लास हम लोग की कौन सी ये है. दीपनविता ने दिया है. हम लोग इस पर होली के बाद कंसिडर करेंगे. एटलीस्ट 3 दिन का शेड्यूल आपको पहले से पता रहेगा. यस सर. यस सर. ओके, ये हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है. और कुछ? सर और एक टेस्ट जो हो वो जैसे संडे की क्लास नहीं होती इवनिंग, तो अगर मंडे कोई टेस्ट हो जैसे मिल अच्छा, यानी कि आप ये चाह रहे हो. देखो हॉलीडे. एक्चुअली ये हम कर सकते हैं, बट मेरा जो मानना है, ये मानना है कि अगर आपका एक बार क्लास हो गया है, आपने क्लास अटेंड कर लिया, तो आपको एनी टाइम विदाउट प्रिपरेशन टेस्ट के लिए तैयार होना चाहिए. और प्रिपरेशन आफ्टर टेस्ट करना चाहिए आपको. ओके सर. पूछो क्यों? इसलिए क्यों सर? क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपकी पूरी तैयारी कभी नहीं हुई हुई रहेगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हमें रिकॉलिंग की आदत डालनी चाहिए कि रिकॉल किया, टेस्ट में ही रिकॉल किया, यार ऐसा क्वेश्चन तो किया था आज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है.
सो टेस्ट को आप इस ढंग से मत देखो कि आपको कितना आ रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप टेस्ट को कुछ इस ढंग से देखोगे कि आपका कहाँ कहाँ प्रिपरेशन नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। देखो बात को समझने की कोशिश करो, बड़ा ही माइन्यूट सा चीज है। अगर मैं आपको पहले से बता देता हूँ कल आपकी टेस्ट है, आप सिर्फ उसी टॉपिक पर पूरी तरह से जी जान लगा करके दे दोगे, आपके मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक ठाक आ जाएंगे, सब चीज हो जाएगा। लेकिन 2 महीने बाद तब तक आप ये सारा भूल जाओगे। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप टेस्ट दो और बिना प्रिपरेशन का टेस्ट दो, और फिर उसमें से आप 30% 40% जितना भी क्वेश्चन होता है हो जाए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उसे आफ्टर टेस्ट जा करके आप रिवाइज करोगे, डाउट क्लियर करोगे, सारा चीज करोगे, तो आप वो पूरी लाइफ याद रखोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यस सर। जैसे कि आप देखो, कोई भी अगर आप एग्जाम देने जाते होगे, उस एग्जाम में जो आपकी गलती होती है जिस क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन आपको पूरी लाइफ याद रहती है। यस सर। तो हम जो यहाँ टेस्ट ले रहे हैं उसमें हम आपको इनकरेज कर रहे हैं कि इनोसेंटली जितनी ज्यादा से ज्यादा गलती हो सके वो सब कर लो यहाँ पर, और उसको ठीक करते जाओ। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि लास्ट 5 लेंथ टेस्ट और फुल टेस्ट वो मैं आपको शेड्यूल देकर दूंगा। ठीक है? तो एक बार ये करके देखो, अगर नहीं सही रहेगा तो फिर निश्चित रूप से आपकी ही बात मानी जाएगी, है ना? बट मुझे ऐसा लग रहा है कि टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना इटसेल्फ आपको पीछे ले जाएगा। सिंपल सी बात है, आज की क्लास हुई, अगर मैं कोई टेस्ट के लिए देता हूं, यू आर रेडी, चलो यार ये है ये है ये है, करके देखते हैं क्या होता है नहीं होता है ना? क्योंकि एग्जाम में तो देखो हमेशा नए क्वेश्चन ही आएंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे बट क्वेश्चन नए रहेंगे आपके लिए, है ना? यस सर। एक बार करके देखते हैं, 2-4 टेस्ट ऐसे ही करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और प्लस मैं तो आपको ये भी दे रहा हूं कि भाई आज टेस्ट हुआ तो दिन भर में कभी भी दे दो, है ना? दूसरे दिन तक भी दे दो। देन हाँ। सर, जैसे छोटा सा टॉपिक होता है, जैसे अभी वो हमने पोटेंशियल वाला किया था ना, जैसे मैक्सिमा हम्म मिनिमा हम्म वाला, तो वो जैसे हम्म विदाउट प्रेपरेशन ही दिया था। तो हम्म दैट वाज गुड कि बिल्कुल छोटे टाइम के बाद ही हमने वो टेस्ट दे दिया, मतलब थोड़े हम्म टाइम के बाद, क्योंकि वो चल रहा हम्म था। जब ज्यादा हम्म जैसे अभी टूल्स एंड वो उसका काफी उसके लिए प्रेपरेशन वो चीज थी कि वो मतलब माइंड में ही नहीं हम्म था, काफी एग्जैक्टली निकल चुका वही था। तो, यही तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप टेस्ट दोगे तो आपको पता, अगर आप बहुत प्रिपेयर करके टेस्ट दोगे तो क्या होगा कि आपको रटने की आदत आ जाएगी। समझने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप बिना प्रिपेयर दोगे तो आपको ये पता चल जाए, यार ये वाला चीज मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैं जरा उस पर अलग से काम करूं। समझ रहे हो? जैसे आपने कोई क्वेश्चन वैसे किया जो आपको लग रहा है यार ये तो किया था कभी हो ही नहीं रहा है, तो उस टेस्ट के बाद जो आप रिवीजन करोगे वो बड़ा ही फोकस रिवीजन होता है। आप ऐसा कर लो कि आप टेस्ट दो, रिवीजन करो, फिर से उसी टेस्ट को दो। व्हाट इज प्रॉब्लम इन दिस? यस सर। नहीं, वो तो आपके लिए ओपन है, आपकी अपनी संपत्ति है, जब चाहो तब उसका यूज करो। ये भी तो कर सकते हैं, नहीं? कि एट रैंडम टेस्ट दिया, उस टेस्ट को आपने दिया, उस टेस्ट को देने के बाद जहां जहां सारी गलती हुई उसके डाउट पूछा, डाउट क्लियर किया, सारा किया, और फिर से 2-3 दिन बाद उस टेस्ट को दिया। यस सर। इसको हम रिवर्स मैकेनिज्म कहते हैं प्रिपरेशन का। क्वेश्चन के थ्रू सीखना, क्वेश्चन के थ्रू सीखना। ठीक है? आप चाह रहे हो थ्योरी के थ्रू क्वेश्चन पहुंचे, थ्योरी के थ्रू क्वेश्चन पहुंचे, वो सब हम क्लास में कर रहे हैं, बट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन के थ्रू आपको रिवीजन करना है। ठीक है? यस देखते सर। हैं, 1-2 टेस्ट करके देखते हैं, आपको अगर नहीं फायदा होगा तो फिर हम ऑब्वियसली ट्रेडिशनल मेथड में चले जाएंगे। ठीक है? जैसे अभी न्यूक्लियर के टेस्ट दिए हुए हैं, आप दो उसे, देखो क्या होता है, कहाँ छूटता है, क्या नहीं छूटता है ना? ओके, सर, एनीथिंग एल्स?
हाँ बताओ। एक प्रॉब्लम है सर एक मुझे टेस्ट पोर्टल को ना ये जो मैनेज होता है ये समझ में नहीं आता। जैसे अभी जो आपने लिंक भेजा था वो अलग होता है, वो टेस्ट जिसमें 20 मार्क्स के थे, 10 क्वेश्चंस थे, और जो हम पोर्टल पे थे वो टेस्ट 30 और 31 न्यूक्लियर का दिया हुआ है। मतलब वो मुझे, आप उसकी चिंता छोड़ दो, हम जो और टेस्ट सर दे एक आप चुपचाप वो टेस्ट दे दो, है ना। हाँ सर, और जो गलत करते हैं उसका आंसर की मतलब कहाँ मिलेगा वो नहीं, वो तो क्वेश्चन? आपके गूगल ड्राइव पर है सारे टेस्ट का सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हाँ आप उसकी चिंता छोड़ो। देखो हमारा टेस्ट का जो पोर्टल है ना, वो हाँ बिल्कुल अपडेट रहता है और हर दिन उसमें चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक है सर। पूरी एक टीम उसके पीछे लगी हुई है और वो दिन भर उस क्वेश्चन बनाने का ही काम कर रही है वहां पर। तो हो सकता ठीक है कि इस वीक में जो टेस्ट है वो अपग्रेड होकर के नेक्स्ट वीक में फिर से आ जाए, फिर से टेस्ट मिल जाए। हाँ ठीक है, तो आप ठीक उसकी है। चिंता छोड़ो कि हम बाइक पीछे क्या कर रहे हैं। आपका काम है टेस्ट मिला, चुपचाप नहीं कर सर, डालो। मेरे को वो टेंशन नहीं है कि आप पीछे क्या कर रहे हैं। मुझे मेरी तरफ से हम्म समझ में नहीं आता कि जब मैंने टेस्ट जैसे आप दिया मत लेक्चर समझो एंड ना, के बाद आप उसके मत आंसर। समझो उसको, आपको नहीं, उसके आंसर की आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक ठीक है सर। नहीं तो आप जस्ट एक मैसेज करो सतीश सर को, विद इन अ मिनट आपके ठीक है पास सर। आंसर व्हाट्सएप हो जाएगा या आपको ठीक करेक्ट ठीक। लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है। ओके सर। हम्म, ठीक है। ओके सर। देखो दो तरह के टेस्ट है हमारे पास, एक हमारे पोर्टल पर टेस्ट है और एक गूगल ड्राइव पर, गूगल के थ्रू हम टेस्ट लेते हैं। ठीक है, सो दोनों टेस्ट हम आपको दिलवा रहे हैं, है ना। अभी बात करेंगे, डोंट वरी। चलो, टेस्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग एंड क्लास शेड्यूल, ये तो मुझे समझ में आ चुका है। और भी चीजों को अगर आपको कुछ भी हो तो आप फीडबैक दे सकते हो, है ना। वी विल इम्प्लीमेंट इट आफ्टर होली इन अ वेरी रिगरस वे। ओके। यस सर।